Hello class 2 and welcome to the online classes of Gokuldas Public School Khargone. I am Kritika and you are studying English with me. So your exams are over and your periodic test 1, right? It's over and from today we are going to start the English grammar portion. So today we are beginning with the sentence, chapter number 2 of your English grammar, the sentence. Okay, so for that you need to open your English grammar book, the fancy book, okay, and page number 13 of that book. So please open page 13 of your English grammar book. There you can find this chapter, the sentence. So when we have studied chapter number 1 from the literature portion, One Stormy Day, in the exercise given, we have had an idea about what the sentence is, right? हमने exercise में थोड़ा सा sentences के बारे में पढ़ा था जब हम chapter 1 The Stormy Day की exercise कर रहे थे, right? So today in this chapter हम sentences के बारे में जो भी rules follow होते हैं sentences making में, all that we are gonna study today. So beginning with the definition given in your book. Your book says a sentence is a group of words. Okay, what is a sentence? What does your book says? A sentence is a group of words. What is a sentence? It's a group of words. Now what are words? In the previous chapter we have studied what are words? Words are the group of letters. Words क्या है? और या मैं बोलूँ word. What is a word? एक word क्या होता है? कैसे बनता है? Word is a group of letters that are arranged in a meaningful order. Okay, in a way which is readable. Okay. So yes, words क्या होते हैं? बहुत सारे लेटर्स का एक ग्रुप होता है, उससे बनते हैं, लेटर्स से मिलके बनते हैं वर्ड्स. एंड सिमिलरली ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words is called a sentence. Okay, so what is a sentence? A sentence is a group of words. So let's take an example. Let's write some group of words and then let's find out whether group of words actually make sentence or not. Okay, so I am writing some group of words on the board. Okay, so 1, 2, 3, 4. Okay, so we have here some group of words, right? So 4 words basically we have. This K is the article. We are going to study about articles in the upcoming chapters. Okay. So do these group of words actually make a sentence? क्या ये group of words Reena girl is a? According to the definition, a sentence is a group of words, right? ये भी words का एक group है ना, बहुत सारे 4 words हमने लिखे हैं, ठीक है, और साथ में लिखे हैं तो this is a group. But क्या ये group of words एक sentence बना रहा है? Actually, Reena girl is a. No. Okay? Why? Because Reena girl is a कोई मीनिंग समझ ही नहीं आ रहा है कि सेंटेंस में एक्चुअली बोला क्या जा रहा है. सेंटेंस का देयर इज नो सेंस ऑफ दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ओके, देयर इज नो सेंस. सो फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू बी अ प्रॉपर सेंटेंस समथिंग मोर इज नीडेड. एंड व्हाट इज दैट समथिंग? नाउ डेफिनेशन जो है, ये जो पोर्शन है डेफिनेशन का, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये पोर्शन है. So a sentence is a group of words. Sentence words का एक ग्रुप है that makes complete sense. Okay, that
that makes complete sense. ऐसे वर्ड्स का एक ग्रुप है जिनको हमने इस तरह अरेंज किया है कि उसका एक प्रॉपर सेंस है, उस सेंटेंस का एक प्रॉपर मीनिंग उस सेंटेंस का हमें समझ में आ रहा है. बिकॉज अगर मीनिंग ही क्लियर नहीं है तो सेंटेंस का मतलब ही क्या है? Why do we use sentences? We use sentences to communicate, right? We use sentences to express our thoughts, feelings, emotions, our views, our opinions, right? So sentence का आप जो भी communication करना चाह रहे हैं उस sentence से, अगर उसका meaning ही clear नहीं है sentence का, so ऐसे sentence का मतलब ही क्या है? वो sentence हुआ ही नहीं. All right? So sentence, group of words को sentence actually हम तभी बोल सकते हैं when those group of words makes complete sense. Okay? So this group of words doesn't make a sentence, but we can arrange these group of words to make a proper sentence, to make a meaningful sentence. Let's arrange this. So, Reena is the name of a girl, okay? Reena is a girl, okay? Reena एक लड़की है. Reena is a girl. इधर क्या मीनिंग था पता है? हमने वर्ड्स प्रॉपर्ली अरेंज ही नहीं थे. Reena लड़की है एक. No, right? No meaning from this sentence is clear because words were not arranged properly. वर्ड्स को प्रॉपर्ली अरेंज करने के साथ साथ एक और कंडीशन है that follows is, for example, I just remove this word. So what is remaining with me? Reena is a. Reena is a. Reena है एक. Reena क्या है? वो भी बताया ही नहीं गया है इस सेंटेंस में. We are talking about these group of words. So half information is given to us, which does not make a complete sentence. Okay? So sentence एक meaningful sentence, एक complete sentence तभी होता है when the meaning is clear. जो भी words आपके sentences में use हो रहे हैं उस पूरे सेंटेंस का जो एक मीनिंग होना चाहिए वो प्रॉपरली क्लियर हो, उसमें हाफ इंफॉर्मेशन नहीं हो. ओके, सो यस, दिस इज व्हाट वी कॉल अ सेंटेंस. सो रीना इज अ गर्ल. दिस इज अ प्रॉपर सेंटेंस. एंड ऑफ कोर्स टू मोर कंडीशंस फॉलो दिस. फर्स्ट कंडीशन इज there are two conditions. Whenever you speak a sentence, जब भी आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तब सिर्फ एक कंडीशन है जो आपको you should have to keep in mind. That condition is the words should be arranged properly. Okay, words should be arranged in a meaningful order. जब भी आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तब आप जो भी वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, एक मीनिंगफुल ऑर्डर में होना चाहिए. बट जब आप सेंटेंस लिख रहे हैं तब आपको दो बातें और ध्यान में रखनी है फ्रॉम द ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू. सो वो दो बातें क्या है? लेट्स डिस्कस. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड, ऑलवेज कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ सेंटेंस इज a sentence always begins. A sentence, एक sentence always means हमेशा, कभी कभी नहीं, हमेशा. begins means start होता है. ठीक है, begin होना, start होना both are same. A sentence always begins. कैसे start होता है? with a capital letter. with a capital letter. एक सेंटेंस हमेशा किस तरह स्टार्ट होता है? A sentence always begins with a capital letter. Okay? अब ये जो मैंने पूरा लिख दिया है ना, एक सेंटेंस, ये भी एक
always begin a sentence with a capital letter. So now this W is capital. So now the sentence is fine, grammatically fine and correct. So we like to play cricket. हमें क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है. And I think आप लोग इस तरह की एक्सरसाइज भी कर चुके हैं, right? When we were studying the literature portion and that chapter One Stormy Day, जब हम वो चैप्टर कर रहे थे तब इस तरह की हमने एक एक्सरसाइज भी करी थी, जहाँ पर आपने सारे फर्स्ट लेटर्स जो थे, जो सेंटेंसेस आपकी एक्सरसाइज में थे, उसके फर्स्ट लेटर्स आपने कैपिटल करे थे, right? And that's how you made the proper sentences. Okay? So we like to play cricket. So this is how we use the first rule of writing sentences. So a sentence always begin with a capital letter. Don't forget this. Okay? Don't forget that a sentence always begin with a capital letter. Now, कैपिटल लेटर की अगर हम बात कर रहे हैं और हमने आई की बात नहीं की, तो कैपिटल लेटर, देयर इज वन लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट. इंग्लिश अल्फाबेट में एक ऐसा लेटर है जिसको आप अगर वर्ड की तरह यूज कर रहे हैं तो वो हमेशा ही कैपिटल लिखा जाता है, एंड दैट लेटर इज द लेटर आई. ओके, लेटर आई एक ऐसा स्पेशल लेटर है स्पेशलिटी बताने से पहले आई वुड लाइक टू जस्ट इंट्रोड्यूस यू विद बोथ द आईज. ओके, सो जस्ट अ मोमेंट. सो दिस आई, ओके, दिस आई कैपिटल वन इज अ वर्ड. ओके, ये एक वर्ड है, एंड दिस आई, स्मॉल आई, इज अ लेटर. ठीक है? सो जो स्मॉल आई होता है वो हमेशा वो एक लेटर है, ऑलराइट, एंड जो कैपिटल आई होता है जो आप सेंटेंसेस में देखते हैं यूज होता हुआ, वो एक वर्ड है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द आईज, कैपिटल आई एंड स्मॉल आई. अब ऐसा और किसी लेटर के साथ नहीं करना है. कैपिटल ए इज अ वर्ड, कैपिटल स्मॉल ए इज अ लेटर. नो, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए बोथ आर लेटर्स, बट दिस स्पेशल केस इज ओनली देयर विद दिस लेटर आई. When you write the letter small, it's called as a letter. When you write this capital, it's a word that you are writing. So letter I, capital I का मतलब होता है मैं. I am a girl. मैं एक लड़की हूँ. I am a teacher. मैं एक टीचर हूँ. Right? इस तरीके से. So see, small I का यूज, जैसे for example ये word जो है capital, इसमें ये small I यूज हुआ है. Right? So ये small I इधर किस चीज का काम कर रहा है? Small I भी एक लेटर है, एक अल्फाबेट, एक लेटर है.
in this sentence, I am a boy, I is playing the role of a word. Okay, I am a boy. मैं एक लड़का हूँ. क्या मीनिंग है इस सेंटेंस का? मैं एक लड़का हूँ. I am a boy. So here this letter is a word. It's playing the role of a word. So I am a boy. And doesn't matter कि I अभी starting में है, सिर्फ इसीलिए कैपिटल है. No. I जब भी कहीं बीच में भी आ जाता है सेंटेंस के, तब भी I को कैपिटल ही लिखना है. When you have this single I, okay, which stands for the Hindi translation man. Okay, so I am a boy. Now, see, you should always begin a sentence with the capital letter. This is one rule. Let's come on to the other rule. So the next rule is, sentence start कैसे होता है ये तो हमने बता दिया है, but end कैसे होता है हमेशा, that we are going to learn. So the second rule is, a sentence always ends with a, एक सेंटेंस हमेशा एंड होता है कैसे? With a punctuation mark. ओके, एक सेंटेंस हमेशा किस तरह एंड होता है? एक सेंटेंस हमेशा जब भी आप लिख रहे हैं, whenever you are writing a sentence always ends with a punctuation mark. So basically in your syllabus we have 3 kinds of punctuation marks. Okay, so those 3 punctuation marks are, first is the full stop. Full stop. The sign of a full stop is this, a dot. Okay. See, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है, इसके एंड में भी I have ended this sentence with a full stop. Okay. So this is a full stop. So full stop. The sign is this. Then we have question mark. The sign of a question mark is this. Okay, the sign of a question mark is this. Then another punctuation mark that we have is the exclamation mark.
of sentences the full stop is used usually. For example, you are students. Okay, it is a fact, right? कि आप students हैं, आप हैं, right? So you are students. अब ये sentence कोई question तो नहीं पूछ रहा है हमसे, या कोई surprise या कोई shocking चीज तो है नहीं कि you are students. Okay, this is just a simple fact that you are students. So इस तरीके के sentences के end में हम use करते हैं full stop. Okay, some more sentences जिनके end में हम full stop use करते हैं can be I like to eat noodles, or my favorite flavor of ice cream is chocolate, and like that. Okay, some facts. Okay, जो चीजें हैं तो है, right? Like that. Now coming on to the question mark. Question mark is always used at the end of the questions. Okay, the sentences which expresses a question. So at the end of every question we use the question mark. For example, who are you? Okay, for example, who are you? तुम कौन हो? So अब ये कोई फैक्ट तो है नहीं तुम कौन हो. डेफिनेटली हमने एक सवाल किया है, तो जिससे सवाल किया है वो एक आंसर होगा उसके पास कि वो कौन है. So तुम कौन हो? Who are you? So this sentence is asking a question. This is a question. So that's why we will always use the question mark at the end of every question. जब आप क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखते हैं तो जो आंसर्स होते हैं ना यूजुअली वो स्टेटमेंट्स होते हैं या कुछ फैक्ट्स होते हैं. ठीक है, तो उन आंसर्स के एंड में हमेशा हम फुल स्टॉप यूज करते हैं. एंड जब आप क्वेश्चंस लिखते हैं इन योर बुक आल्सो यू कैन सी दैट एट द एंड ऑफ एवरी क्वेश्चन द क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड. ओके, एट द एंड ऑफ एवरी क्वेश्चन द क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड. Now, this new thing that we have read about, exclamation mark. Exclamation mark. So, exclamation mark का साइन है ये inverted I. अब exclamation mark हमेशा exclamatory sentences के end में use होता है. कितना बड़ा बोल दिया ना मैम ने, exclamatory sentences. What are exclamatory sentences? क्या होते हैं exclamatory sentences? देखो, जिन sentences के end में full stop use होता है वो simple facts होते हैं. जिन sentences के end में question mark use होता है वो questions होते हैं. Questions और answers या facts के अलावा भी हम काफी सारी चीजें express करते हैं sentences के through. For example, अगर मैंने कोई बहुत टॉल बिल्डिंग देखी तो आई वुड बी रियली सरप्राइज, ओ माय गॉड सच अ टॉल बिल्डिंग. सो ये जो सरप्राइज वाला फीलिंग है ये भी तो हम सेंटेंसेस के थ्रू ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट? कोई बच्चा क्लास में अगर बहुत नॉटी है सो टीचर जो है वो बिल्कुल सरप्राइज है उसकी एकदम नॉटीनेस देख के कि कितना ज्यादा नॉटी है. हाउ नॉटी यू आर. ओके, आपको कभी कभी बोलते हैं ना आपके टीचर्स हाउ नॉटी यू आर. ओके, सो आप कितने नॉटी हो, वो आपसे पूछ नहीं रहे कि आप कितने नॉटी हो, बताओ कितने नॉटी हो. ऑन द स्केल ऑफ 100 आप बताओ आप कितने नॉटी हो. कोई आपसे पूछ नहीं रहा है. कि आप ये जो फीलिंग्स है, ये सरप्राइज, ये शॉकिंग एक्सप्रेशंस है जिनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के थ्रू यूज करते हैं. ओके, अगर आपकी फ्रेंड ने कोई बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनी है सो आपका रिएक्शन उसको देखते ही क्या होगा? सच अ लवली ड्रेस और सच अ प्रिटी ड्रेस. आपकी फ्रेंड अगर बहुत सुंदर लग रही है सो हाउ वुड यू रिएक्ट, हाउ वुड यू लाइक एक्सप्रेस योर फीलिंग्स थ्रू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लाइक हाउ ब्यूटीफुल यू आर और हाउ ब्यूटीफुल यू आर लुकिंग. ओके, सो लेट
Okay. So see, this was it for the explanation of the sentences. In the next lecture onwards, we will be making the sentences. So I'll give you one simple homework, okay, to do today. That homework you will do in the classwork section of your fair notebook. So yes, in the notebook you have to write these headings. English grammar chapter 2, the sentence. Okay, it's more zoom. Okay now. So English grammar chapter 2, the sentence. This heading you will write in your fair notebook, and the homework question is, so rewrite these sentences by using capital letters and punctuation marks. Okay, so first sentence is, I have a blue bicycle. Second sentence is, you are my best friend. Third sentence is, how old are you? Fourth sentence is, why are you coming late? Fifth sentence is, such a lovely dress.
exclamation mark, that you